A very good morning, my dear students and my lovely artists. So, I welcome you to your new session, and as today is your first day of art class, so this is a canvas. As you all know, our topic, we have to make a painting with acrylic colors on canvas. So, this is the plyboard canvas, okay, this side, okay, you can see. And I have told you for 10 by 10 canvas you can take a little bigger if you want, okay, so it's little bigger than 10 by 10. Okay, another thing you need acrylic colors, okay, you can take this one, or else you can go with the fabric colors like these tubes, these bottles, okay. So brushes you need, and one waste plate you need, and tissue paper, okay, and water. Okay, let's start now. So here I have taken out the colors. This is cobalt blue, this is not Persian blue, okay, and this is light blue, crimson lake. The actual name of the color red is crimson lake, so this is little darker than red, okay, and that is orange, lemon yellow, black and white. सो यू कैन सी कि मैंने जो कलर्स हैं वो बहुत दूर दूर निकाले हैं, ठीक है। कलर्स को कभी भी इतने पास पास नहीं निकालना, ओके। सो लेट्स स्टार्ट, एंड हेयर आई एम टेकिंग फ्लैट ब्रश, ओके। दिस इज़ नंबर 8। दिस इज़ ऑन योर कंफर्ट जोन। जिस ब्रश के साथ आप कंफर्टेबली उसको बना सकते हो आप करो, ठीक है। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक cobalt blue, okay. I'm using less water, very less water, and making the color thin, and here I'm going to use it on the canvas, okay. Take the water as per your choice. बस जो कलर है ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए, और ना ही आपने वाटर इतना ज़्यादा लगाना है कि कैनवस का जो बेस टेक्सचर है यहाँ पे वो ख़राब हो, ओके। यू कैन गो लाइक दैट, क्रिस क्रॉस, ऐसे क्रॉस में आप कर सकते हो, ठीक है, एंड ऐसे भी स्लिपिंग में भी कर सकते हो। So here we have done with the dark blue, okay. Now we will take the water and clean your brush, okay. Let it be a little wet, and then come to the light blue color, okay. Load your brush with the color as you can see, and then do it here first, down part, okay, and again take it, and then do overlap of dark blue. Do overlapping on the light blue. First do it at the downside, okay. I'm taking little more amount of color, ठीक है। कलर थोड़ा ज़्यादा लेना है आपने कैनवस को पेंट करने के लिए, ताकि जो उसका टेक्सचर है नीचे वाला वो विजिबल ना हो। सो कलर का जो अमाउंट है आपने थोड़ा ज़्यादा लेना है। सी, बोथ कलर आर मिक्सिंग, ठीक है। जस्ट वेट, नाउ सी, दोनों कलर्स को हमने मिक्स किया, पैचेस नहीं आने चाहिए, ठीक है। I am taking little dark blue now, and again doing it on the dark blue and mixing both colors together. Okay, see, दोनों कलर मिक्स लग रहे हैं, मिक्सिंग लग रही है दोनों में, ठीक है। आफ्टर दैट अगेन वॉश योर ब्रश
Now here I'm taking little bit of Crimson Lake, and from the side I'm taking white and I'm mixing it. Less less red, more white. Okay, like this, and we are mixing it together. Then अगेन कोई भी अगर आपने थर्ड कलर स्टार्ट करना है, हम इससे लाइट ले रहे हैं, तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट इसके ऊपर नहीं करना है. इफ़ यू विल डू इट ऑन दैट, तो आपका पूरे में शेड में वही शेड आएगा. पहले आप फ्रेश कलर नीचे लगाओ यहाँ पे, ठीक है, डाउन साइड. एंड देन slowly mix them together as we have done on the upside, like this. Okay, and this color you can use here like clouds, a little bit here, just tap tap tap. Okay, no need to make like the child making like पहले ड्रॉ उसकी शेप ड्रॉ करो, देन डू कलर इन दैट. नो नीड टू डू लाइक दैट. Just take the color and tap 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 tap, and you can see it's giving a look of cloud. Okay, very easily. Okay, again wash your brush. Okay, now downside I'm going to use lemon yellow directly like that, and little bit overlapping the baby pink. Okay, and again I'm not washing the brush now. I'm just taking the orange color directly and going to do it on the down part. Take the color and use it properly. So you can see we have done with the background. You can use your hands also, your fingers, to immerse the color. If you think that shading is not going good, you can use your finger, but very gently, very smoothly. Don't make hard patches on that. Just softly use your fingers over here and make a smooth texture with your fingers, right? As I'm taking lemon yellow, see, I'm taking lemon yellow in my hand. I want to make more lemon yellow here. Then I will use the color like that. All right, so no need to worry about the shape and all. This is a nature painting, landscape. So let it get dry for some time, and then we will come to the step 2. All right, yeah, by the time your painting is getting dry, go and change your dirty water. Okay, all right, so our painting is little dry. Okay, so sorry, here we have to work with black color. Okay, so now we will take small number brush, like here I'm taking number 4. Okay, and after that we required round brush. Okay, and here I'm taking 2-3 numbers which will be comfortable with me. I'll go with that. So number is not mentioned. I think it's 3 number. All right, so first start with the flat brush. Okay, so here I'm using little bit water, and taking black color on my brush. सी ब्रश को जब भी आपने कलर लगाना है ना, ब्रश को जैसे हमने बैकग्राउंड किया, तो ब्रश में कभी भी इतने हाफ में कलर नहीं लगाना. ब्रश को अच्छे से लोड कर लो कलर के साथ एंड डू यूज़ इट. सो बार बार कलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हेयर आई एम टेकिंग मोर एंड मोर कलर ऑन माई ब्रश. ओके, ठीक है, ढंग से अच्छे से ध्यान से लेना है. देन फ्रॉम द डाउन पार्ट हेयर just make random lines like that. It's little wet, इसीलिए texture नहीं आ रहा अभी अच्छे से.
just make this part, okay, and then add black color on that. slowly and ब्रश को प्रेस नहीं करना ज़्यादा. सी फ्रॉम वेयर आई एम होल्डिंग द ब्रश, बैक साइड से, ओके. ब्रश को पास से नहीं पकड़ना. स्मूथली fill up the black color. Okay, so this part is done. Now I'm going to take round brush. I think this will be good. This is number 3 or 4, I guess. Okay, yeah, this is number 4. Okay, and take black color again. When you are using राउंड ब्रश ना, तब आपने ब्रश को लोड नहीं करना कलर ज़्यादा लेके, ठीक है. मतलब इतना लेना है जिसको हम इजीली हैंडल कर पाएँ. ओके, सो डाउन टू अप वी विल मेक सम लाइन्स लाइक हियर. सॉरी, थोड़ा सा कलर को यहाँ पे हमने थिन करना है, ठीक है, ताकि स्मूथली हमारी लाइंस जो हैं फ्लो में जाएं ऊपर, लाइक दैट. ओके, वन विल बी लाइक दैट, दिस साइड एंड अप. Just see one thing, that line I'm making here, it is thick from downside and it's very sharp when it's going up. Let me show you, wait, see, it's thick from downside, when it's going up it's going to be thin. Okay, so आपने धीरे धीरे से इस लाइंस को बनाना है, ठीक है. कलर थोड़ा सा थिन कर लेना आप. So like that we will make some thin line. Okay, and one will be here. मतलब कोई भी जो लाइन आप बना रहे हो ना यहाँ पे, वो एकदम स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए. ओके, एंड देन डाउन साइड we will make some, just tap 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 and make the shape like that. Okay, here and same on the upside like that. Okay.
Okay, so we'll go like that. Little bit downside here. It will be a little thicker. So this is the upside. Okay, कलर को थिन करना है आपने ब्लैक वाले को, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, ठीक है, सो दैट जो आप ये फाइनल वर्क कर रहे हो यहाँ पे वो स्मूथली हो आपका. Okay, and in the sky I'm taking very thin brush. This is 0 number round brush, 0 number round brush. Okay, you can make birds in the sky. Be very careful because your black is wet. Okay, so go from the safe side and very small. Okay, thin and small like that. Okay, so जितना बर्ड दूर होगा उतनी ही स्मॉल उसकी लाइन लगेगी, ठीक है. आई एम मेकिंग वन हेयर आपको बताने के लिए कि यहाँ से अपसाइड जा रहा है तो दैट विल बी ऑल्सो वेरी स्मूथ. ये जो हमने नेचर की लुक दी है, प्लांट्स बनाए हैं, ये नियर बाय हैं इसलिए ये बिग हैं, और दोज birds will be smaller. Very sharp lines. See. Okay. You can see this one. Okay. So with that we are done with your drawing. And one more thing, if you want to add more clouds, then you can add like that. Take the fresh white color on your brush. Okay, I'm taking fresh white on the brush, and here, like you can see, it's very dark from upside, so we can go with like that. Just add little color and give it a shape. Okay, and then again, your hands are your best brushes. Okay, and I'm going to take little bit water on my finger and I will immerse it with the background. कोई भी सॉरी शार्प एंडिंग नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट. ओके, फिंगर पे थोड़ा सा मैंने कलर लिया एंड आई एम जस्ट मेकिंग इट वेरी सॉफ्ट, क्योंकि जो क्लाउड्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट से आपने देखे हैं ना स्काई में कि कैसे लगते हैं वो, लाइक कॉटन. ओके, सो लाइक दैट यू कैन add more clouds in your painting. And here we can make in the corner like that, and after that put some water on your finger, just touch, and then immerse them.
Okay, so it's giving the effect of cloud. Don't go in much details here. All right, so with that we are done with our topic. I hope you all will definitely like this work. Okay, so after done this painting, I think you will take 1 day full or 2 days. Okay, after finishing your topic, please send me your work. Okay, and keep your canvases safe, as whenever the school will reopen, we will keep it with us and we will do something good with your work. Okay, thank you, and please don't forget to write down your name on the right corner, very small. It is still wet, so I'm not writing my name. Okay, okay, bye bye and have a wonderful day. Bye bye.